ओके, तो हमने अभी चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे, चैप्टर 2 हमारा आज हम फिनिश कर रहे होंगे। सो बिफोर वी कंप्लीट दिस चैप्टर, ये चैप्टर 2 जब हम स्टार्ट किया था तो दिस वाज व्हाट सिनॉप्सिस, ये हमने डिस्कस किया था। और इस चैप्टर को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो पहला पार्ट था दैट वाज अर्जुन क्वेश्चनिंग फर्दर ऑन हिज डाउट्स एंड देन ही फाइनली सरेंडर्स टू कृष्णा। जो सेकंड सेक्शन था दैट वाज ज्ञान। ज्ञान किस विषय में डिस्कस कर रहे हैं कृष्णा? हमें सोल के विषय में, व्हाट इज सोल, व्हाट इज द कंपोजर ऑफ इट, कृष्णा इज गिविंग अस दैट इंफॉर्मेशन, दैट नॉलेज, दैट इज ज्ञान योग। सेक्शन 3 जो था कर्म कांड, कि व्हाट वी शुड डू, व्हाट आर व्हेन वी शुड फॉलो आवर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज, वट एवर आर द ड्यूटीज वी शुड डू दोज ड्यूटीज रिलीजियसली एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दोज ड्यूटीज। चैप्टर जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 वाज बुद्धि योगा, कि हमें कैसे हमें कर्म करना चाहिए, क्या क्वालिटीज होती हैं, हमें कैसे वी हैव टू बी डूइंग आवर ड्यूटीज। देन दिस सेक्शन 5 इज द स्थित प्रज्ञा इज समाधि। तो हु इज रियलाइज पर्सन? नाउ अर्जुन इन श्लोक नंबर 2.54 अर्जुन क्वेश्चंस कृष्णा कि हु इज द रियलाइज पर्सन, हु आई शुड अंडरस्टैंड कि क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन ही इज आस्किंग। जैसे आई विल मूव ऑन टू दिस श्लोक, जस्ट अ मिनट। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, तो बीमार व्यक्ति के क्या सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स कहना चाहिए, कि कैसे में पता पड़ता है कि वो व्यक्ति बीमार है? कोई बताना चाहेगा कैसे पता पड़ता है? जैसे किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, तो कैसे पता पड़ता है कि उससे दैट पर्सन इज सिक? कॉफिंग, करेक्ट। तो जैसे एक कोई बीमार व्यक्ति है, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसके कुछ बॉडी बिहेवियर होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं दैट पर्सन इज डिसीज्ड। या बहुत छोटा सा मटेरियलिस्टिक एग्जांपल देंगे कि कोई व्यक्ति, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई इंटेलिजेंट है या कोई डम है? द वे ही और शी स्पीक्स, वी कैन अंडरस्टैंड कि सामने वाला जैसे बात करता है। आपने कई बार देखा होगा कि अ पर्सन इज वेल ड्रेस्ड, बहुत अच्छे से ड्रेसअप है, सब कुछ है, but the time the moment he or she just opens up their mouth, and you can understand that the person is intellectual or dumb or is a fool, you get to know it, right? अगर आप सब लोगों ने वो कालिदास की अगर स्टोरी सुनी होगी, तो जो कालिदास और शकुंतला की जो स्टोरी थी, तो उसमें क्या होता है, कालिदास एक मूर्ख होते हैं, उनकी शादी शकुंतला से कर दी जाती है, राइट? शकुंतला से शादी वो कर देते हैं। जो कई ज्ञानी लोग होते हैं वो डिफीट हो जाते हैं शकुंतला से, तो वो अपना बदला लेने के लिए कालिदास की शादी शकुंतला से कर देते हैं। और वो क्या बोलते हैं कालिदास से कि तुम चुप रहना, जब वो क्वेश्चन करेंगी तो यू हैव टू आंसर मौन मौन रह के, इन म्यूट फॉर्म यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। तो वो म्यूट फॉर्म में वो क्वेश्चंस पूछती हैं शकुंतला, और ये इशारों में आंसर करते हैं। तो टिल दैट टाइम शकुंतला डजंट गेट्स टू नो कि कालिदास इज अ फूल, कालिदास इज नॉट एन एक्चुअल इंटेलेक्चुअल पर्सन। बट व्हेन शी स्टार्ट स्टेइंग विथ हिम, जब उनकी शादी हो जाती है, जब वो साथ रहने लग जाते हैं, तो उन्हें पता पड़ जाता है कि ये व्यक्ति मूर्ख है, ये कोई समझदार ज्ञानी व्यक्ति नहीं है। तो वही वही सिम्टम्स आज अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। और अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि हाउ शुड आई नो, आस्क 4 क्वेश्चंस एज टू हाउ टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऑब्वियसली बात है कि अभी कृष्ण ने उनको क्या क्या बताया कि ये प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, ऐसे करना चाहिए, ये ज्ञान है, दिस इज सोल। उनको बताते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स, अगर आप जब आप प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फॉलो करते हैं तो आप क्या, आपके एडवांटेजेस होते हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इट, एवरीथिंग कृष्णा हैज एक्सप्लेन। एंड हाउ टू डू दी, जैसे कि हमने जब हमने फोर्थ सेक्शन पढ़ा था तो निष्काम कर्म योग के बारे में पढ़ा था। इस चीज को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कर्म योग में डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में। तो जब हमने इसी में सेक्शन 3 में, जब हम फोर्थ में डिस्कस किया था, तो उसमें डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई भी एक्शंस करते हैं, वी शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट द फ्रूट्स ऑफ इट, एंड वी शुड नॉट ट्राई टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ आवर एक्शंस, वी शुड इंस्टेड गिव इट टू हुम, टू कृष्णा। तो अब अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कृष्ण से कि हाउ शुड आई आइडेंटिफाई, कि वो ऐसे कौन लोग होते हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं, जो अपने एक्शंस को आपके चरणों में समर्पित कर देते हैं। सो हाउ शुड आई गेट टू नो इट? So Arjun's 4 questions are general symptoms. What are the general symptoms? और कृष्ण इन questions को आंसर करते हैं. So in the last section, this is the last section, samadhi. This
is being discussed. So entire everything is being discussed from 54 to 72. So how does he speak, how does he sit, how does he walk, everything. अब कृष्णा इन सारी चीजों का आंसर करेंगे. So श्लोक नंबर 2.55. The highly developed soul always remains satisfied in himself by realizing himself as the eternal servitor of the Supreme Lord. Such a transcendentally situated person has no sense desires resulting from petty materialism. Rather, he remains always happy in his natural position of eternally serving the Supreme Lord. तो जो हाईली डेवलप जो एक्चुअली इटर्नल जो ट्रांसेंडेंटल पर्सन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सेटिस्फाइड रहते हैं. दे डोंट हैव एनी सेंस डिजायर्स, दे डू नॉट गो आफ्टर ग्रेटिफाइंग द सेंसेस. सो दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड विद देमसेल्व्स. और वो सिर्फ कृष्ण की सेवा में लग रहे थे. व्हाट देयर मेन एम इज जस्ट टू सेटिस्फाई कृष्ण. श्लोक 2.56 to 59. The Sthita the Muni is always in Krishna consciousness. The Muni word is being used. Muni is like who is always steady in their consciousness. So is always fixed up in Krishna consciousness. Such a fully Krishna conscious person is not at all disturbed by the onslaughts of the threefold miseries. For he accepts all the miseries as the mercy of the Lord, thinking himself only worthy of more trouble due to his past deeds. And he sees that his miseries by the grace of the Lord are minimized to the lowest. Similarly, when he is happy, he gives credit to the Lord, thinking himself unworthy of the happiness. He realizes that it is due to only to the Lord's grace that he is in such a comfortable condition and not unable to render better service to the Lord. तो प्रभुपाद यहाँ परपट में बहुत से एक्सप्लेन करते हैं कि अ पर्सन हु इज फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, तो हाउ डज मतलब उसकी क्या कॉन्शियसनेस होती है, वो क्या जब भी जिंदगी में जो मिजरीज होती हैं, जब कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, दुख सुख है, या मौसम की वजह से जो टेम्परेचर चेंज है कि सर्दी गर्मी है, और या कोई भी परेशानियां आई, या इफ देर इज अनयूजुअल थिंग विच इज हैपनिंग इन द फैमिली और विद द रिलेशंस. सो हाउ दैट पर्सन हैज बीन फिक्स्ड अप इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते. अभी अर्जुन ने क्या क्वेश्चन किया है कि व्हाट आर द सिम्टम्स, तो वो क्या बोलता है, क्या सोचता है, कैसे चलता है. सो कृष्णा इज आंसरिंग ऑल दीज थिंग्स कि व्हाट इज, हाउ डज दैट पर्सन रिएक्ट्स, हाउ डज दैट पर्सन थिंक्स अबाउट इट. So what does Prabhupada is saying here? He's always fixed up in just serving the Krishna. जो भी कुछ अच्छा बुरा होता है, he just thinks that it is just the mercy of Krishna. And even if there are problems in the life, he just thinks that they have been reduced by the Krishna's mercy. I was meant to suffer this much, but I am suffering only this much. Why? Because Krishna meant it that I should suffer only this much. तो वो ये नहीं कि जब भी कुछ दिक्कतें आई तो बस कि भगवान ये सारी दिक्कतें मेरे साथ ही क्यों हो रही है, मैं तो आपकी इतनी भक्ति करती हूँ, मैं तो इतनी माला करती हूँ, फिर मेरे परसेंटेज ही कम क्यों बनते हैं, और दूसरे के परसेंटेज इतने ज्यादा क्यों बनते हैं, वो भक्ति नहीं करते हैं फिर भी उनके साथ अच्छा हो रहा है. सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जो भी कुछ हो रहा है दैट इज हैपनिंग बाय कृष्णास मर्सी. डेफिनेटली यू विल हैव टू डू योर कर्मा. इट्स नॉट कि you just start saying that I chant my 16 rounds religiously and I do not study, and Krishna will award you with the topmost performer in the class or in the college. So that is not going to happen. You have to definitely do your karma. ये भी चीज अभी आएगी, ये भी चीज. इसलिए ये जो भगवत गीता है ना इज वेरी वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दैट डू नॉट renounce anything in the name of just कि I am taking sannyas or renouncing your duties. This is not the real action which is being promoted by Krishna. So the the basic which Krishna is highlighting here is, sorry, Prabhupada is saying here in the purport is कि कोई भी जो मिजरीज होती हैं, कोई भी दिक्कतें होती हैं, what that person thinks that I was meant to suffer a lot, but by Krishna's mercy I'm just suffering little bit. थोड़ा बहुत मुझे दिक्कतें आ रही है. जैसे मुझे इससे एक प्रभुपाद का पास्ट टाइम याद आ रहा है. इट वॉन्ट नॉट बी सो रिलेटिव टू इट, बट येस वी कैन रिलेट अ बिट. कि प्रभुपाद एक बार कहीं मंदिर दर्शन करने जा रहे थे किसी इस्कॉन टेम्पल में, एंड इट इज लाइक बाहर की बात है. और देन ही वाज मेंट टू टेक प्रसाद, एंड समहाउ आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर द एंटायर पास्ट टाइम करेक्टली. एंड समहाउ वो जो प्रसाद होता है वो उनके साथ जो प्रभुपाद के जो सर्वेंट होते हैं, एंड बाय मिस्टेकनली इट गेट्स फॉल्ट, आई मीन वो पूरा गाड़ी में गिर जाता है. तो अब दैट जो सर्वेंट होता है ही गेट्स कॉन्शियस कि प्रभुपाद वाज मेंट टू टेक दिस प्रसाद, एंड इट इज नाउ लाइक ऑल स्पिल्ड अप इन द कार.
And now how will Prabhupada will have prasad? Because definitely Prabhupada doesn't take anything apart from that, right? So what I recall it, कि Prabhupada says that this is Krishna's mercy, that it is meant that Krishna meant it कि आज मेरे को fasting रहना चाहिए, आज मुझे नहीं प्रसाद लेने का था. So this is like Krishna, like this is not like कि Prabhupada started shouting at that servant or saying that no, just arrange me another prasad for me, or why is Krishna doing? I'm doing so much service and I have to take my medicines and this and that. Why I'm not getting prasad? So instead of criticizing Krishna, that why things are happening to me, instead a realized person, a person who is steady in consciousness, thinks that whatever is happening to him or her is by the mercy of Krishna, even if it is happiness which is coming in their life, or even if it is the sadness or unusual things, or not things which are not liked by them is coming in their life. So the tortoise can at any moment wind up his senses and exhibit them again at any time for particular purposes. Similarly, the senses of Krishna conscious person are used only for some particular purpose in the service of the Lord and are withdrawn otherwise. तो ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन जो यहाँ पर पट में डिस्क्राइब्ड है, टॉर्टोटाइज से है. जो कछुआ होता है, कछुआ अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा, तो कछुआ क्या करता है, अपना पूरा हाथ पैर सिकोड़ के अंदर अपने शेल के अंदर कर लेता है. व्हेन ही वांट्स टू पुल देम आउट, व्हेन ही वांट्स टू वॉक और क्रॉल, देन ही वो उनको हाथ पैर बाहर निकाल लेता है. एल्स वैसे सिकोड़ के अपने शेल के अंदर कवर कर लेते हैं, रख लेता है कि नोबडी अंडरस्टैंड्स कि देयर इज अ टॉर्टोटाइज, राइट? So how he has control over his limbs, movement. So similarly, जो एक realized person होता है, the person who is fixed up in Krishna consciousness, he knows that he has to have control on his senses. Obviously, this is a fact which is very much important. If you are fixed up in serving only Krishna, you will not be serving your own senses. Definitely, if you are taking prasadam, you are taking prasad which has been offered to Krishna. If you like singing, you are chanting holy name, you are doing kirtan, you like dancing, you are dancing for Krishna's pleasure. So definitely you're using your senses for the pleasure of Krishna, not for your sense gratification. So here also the senses have to be trained to be controlled so that you can fix them up into the Krishna consciousness. So the जो जो अर्जुन का प्रश्न है कि कैसे वो चलते हैं, कैसे बात करते हैं, how do they think? So like they have control over their senses, just like a tortoise has control over its limbs. So restraining is difficult because taste of sense objects still remain. तो यहाँ बहुत अच्छा ये बात बोली गई है कि रिस्ट्रेनिंग इज डिफिकल्ट. डेफिनेटली जैसे आप लोगों ने ये बात बहुत बार सुनी भी होगी, इन फैक्ट यू मस्ट हैव फेल्ट इट प्रैक्टिकली एज वेल, कि अगर आप किसी को मना करेंगे कि ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, it is very difficult for to control a person, right? Instead, you should be telling what to do. Instead of telling what not to do, you should tell what to do, so that that person engages his senses in doing that particular task. तो restraining something is very difficult. अगर जैसे एक साधारण सा एग्जाम्पल दूं, और जो हम सब रिलेट भी कर सकते हैं, कि अगर जैसे हमारे पेरेंट्स अगर किसी चीज के लिए मना करते हैं कि नहीं बेटा ये नहीं करना है, नहीं ये नहीं करना है, देन जो टेंडेंसी होती है करने की वो ज्यादा होती है, वो हम ज्यादा हमारा मन करता है. अगर हमें बोला, जैसे बीमार व्यक्ति है, तो इस एग्जाम्पल में आया भी है कि इफ अ पर्सन इज सिक, तो उसमें अगर वो व्यक्ति जब बीमार है, तो अगर उसको बोला जाए कि फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, तो डायबिटीज है, तो अगर डायबिटिक पेशेंट को बोला जाएगा कि आप शुगर मत खाओ, तो दैट पर्सन गेट्स इरिटेटेड और टाइम्स कि नहीं शुगर क्यों नहीं खाना. या जिसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, अगर आपके पेरेंट्स को, अगर भगवान करे ऐसा कभी ना हो, बट इन केस इफ यू हैव, यू मस्ट बी एबल टू रिलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इफ अ पर्सन हैज डायबिटिक और हैज अ ब्लड प्रेशर, इफ यू से दैट पर्सन नॉट टू ईट मोर सॉल्ट और डोंट टेक मच ऑफ शुगर, दैट पर्सन गेट्स इरिटेटेड अ लॉट. क्योंकि हम क्या डायरेक्ट कर रहे हैं सामने वाले को कि ये मत करो, हम ये बता नहीं रहे कि ये करो. If we are giving replacements of it, if we are giving alternatives of it, that becomes rather easier. तो हमारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो हमारा this entire movement is based upon that only. We are not restricting people to do certain activities. We are instead trying to engage the senses in the right direction. So we are trying to engage. Everybody has sense enjoyment,
प्रोपेंसिटी। तो अभी जो सेक्स एंजॉयमेंट जो प्रोपेंसिटी है उसको हम इंडल्ज किस में करना चाह रहे हैं? हम उसको कृष्ण की सेवा में इंडल्ज करना चाह रहे हैं। इफ अ पर्सन लाइक्स टू प्रीच, इफ अ पर्सन लाइक्स टू मीट मेनी पीपल, ही कैन गो फॉर प्रीचिंग। इफ अ पर्सन लाइक, जैसे सेल्स की क्वालिटी है, he likes that doing the sales job, he can come up in the book distribution. So just using your senses for the service of Krishna. So this is how we are not restraining your senses, we are just trying to engage in the right direction. So restrictions are only good in a neophyte stage, right? तो शुरुआती जो दौर होता है उस समय में बोलना कि ये मत कीजिए वो मत कीजिए, इट्स फाइन, बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग। जैसे आप जो पेड़ होता है, जब पौधा आप लगाते हैं तो पौधा आप उसको सहारा देते हैं, राइट? आप उसको एक स्टिक के साथ में उसको खड़ा करते हैं, क्योंकि उसे पता है ना कि उसको सहारे की जरूरत है। अभी उसको रिस्ट्रिक्शन मिल गया ना उसको कि इसी इसी डंडी के सहारे उसको आगे बढ़ना है। पर जैसे ही वो पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसकी खुद की स्टेम्स मजबूत हो जाती हैं, देन इट डजंट नीड दैट स्टिक, ही कैन ग्रो ऑन इट्स ओन, राइट? तो सिमिलरली इन द स्टार्टिंग, इन अ न्यूफाइट स्टेज, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट रिस्ट्रिक्शंस, जो जैसे हमारे जो बेसिक जो 4 नियम है, जो 4 प्रिंसिपल्स, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं जो प्रभुपाद ने हमें दिए हैं कि 16 राउंड्स चांटिंग, वी हैव टू, जो illicit, avoiding illicit sex, meat eating, and then avoiding this onion garlic. So all these things, avoiding gambling, these are the don'ts. तो ये restrictions जो हमारे इनिशियल स्टेजेस में है, इट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे चल के कर सकते, इसका मतलब ये है कि इनिशियल स्टेज में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो हमारा एक फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए लगाए गए हैं। जैसे हम बोलते हैं हमेशा डिवोटी एसोसिएशन में रहो, डू नॉट मूव आउट ऑफ द डिवोटी एसोसिएशन, so that you feel protected. You'll feel that what is being asked for you to engage your senses, the others are also doing the right thing. So when you are involved with the right set of people at the right time, you'll do the right thing, right? तो वही सिंपल चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि you have to not to restrict it for a longer period. Yes, restriction is important in the early stage, but on the advanced platform, one develops a higher state and it becomes easier to restrain the senses. So one automatically loses taste for pale things. Moving on to text 2.60 to 63. Without developing a higher taste, there is no other effective means to control the senses. The only way is to fix the mind and senses on Krishna. तो कितने अच्छे से हमें ये चीज एक्सप्लेन की जा रही है। इफ यू रीड द पर्पस यू विल गेट टू नो कि पहले हमें क्या कहा गया कि रिस्ट्रिक्शन हम लंबे समय के लिए नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन हमें कम समय के लिए, जो हम शुरुआती दौर है हमें करना जरूरी है, बट इवेंचुअली वी हैव टू डेवलप टेस्ट, eventually we have to develop that higher taste, then only we can sustain in Krishna consciousness. We have to be fixed up in putting our senses, to have control our senses and to serve and to use the senses in the service of Krishna, then only we can sustain in Krishna consciousness. So Krishna consciousness is such a transcendently nice thing that automatically material enjoyment becomes distasteful. So once you have attained this higher taste, so आप लोगों ने सुना होगा कि once you have this developed a higher taste, you'll automatically lose this lower taste, like in material enjoyment. You definitely you'll lose interest on those things. So if it is as if a hungry man had satisfied his hunger by sufficient quantity of nutritious eatables, तो जैसे कोई व्यक्ति है, अगर आपका आपका बहुत पेट भर गया है, जैसे आपने कभी, मम्मी ने कुछ बहुत टेस्टी चीज बनाई है और उससे पहले ही आपने अपना ब्रेकफास्ट एकदम बिल्कुल स्टमक फुल करके आपने कर लिया, और दो अगर आपके सामने गुलाब जामुन भी आता है, तो टाइम्स इट हैपेंस, राइट? आप सबने ये चीज महसूस की होगी कि इवन दो यू लाइक गुलाब जामुन अ लॉट, बट अगर आपका पेट बहुत भरा हुआ है तब भी यू विल से कि अभी नहीं ले सकते हैं, हम बाद में, आई टेक इट आफ्टरवर्ड्स, राइट? It happens क्योंकि you're already satisfied, your hunger is already satisfied. So what are we trying to achieve? We are trying to satisfy our senses by this Krishna consciousness, by serving our senses in Krishna's seva. So automatically we lose interest, automatically the other material enjoyment will become distasteful for us. Maharaj Amrish also conquered a great yogi Durvasa Muni simply because his mind was engaged in Krishna consciousness. अभी आप लोगों ने भागवतम में अम्बरीश महाराज का पास्ट टाइम सुना होगा। जस्ट विल टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट फ्रॉम टू डिस्कस हियर टू जस्ट मेक इट कि हाउ इट इज रिलेटेबल। तो अम्बरीश महाराज का आप लोगों ने देखा होगा कि अम्बरीश महाराज कौन थे? अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत ही उत्तम भक्त थे।
एंड ही वाज अबाउट टू ब्रेक हिज फास्ट, राइट? जो निर्जला का फास्ट वो ब्रेक करने वाले थे, दुर्वासा मुनि कम्स अप एंड ही सेज दैट ही विल हैव इट टुगेदर. सो Nirjala Ekadashi ka fast tha, and even Durvasha Muni was getting delayed, and the Paran time was about to get over. So Maharaj Amrish had to take that drop of water just to break that fast, the Ekadashi fast. And Durvasha Muni gets agitated and he gets angry upon him, and he tries to punish him. So, but Amrish Maharaj, on the contrary, he is a devotee of Krishna. So he is fixed up. How he is fixed up? Because he has control over his senses. उन्होंने अपना जो भी उनके सेंसेस हैं, अपनी सारी इंद्रियों को उन्होंने कृष्ण की सर्विस में लगाया हुआ है. ही यूज्ड टू टेस्ट द प्रसादम व्हिच इज ऑफर्ड टू कृष्णा, यूज्ड टू चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा. whatever the senses are, whatever we have the senses is just have involved them in the service of Krishna. So by attaining, by involving your senses in Krishna seva, he has attained what? He has self control. So even though Durvasha Muni is angry upon him, but he doesn't get agitated. Instead, जब दुर्वासा मुनि के पीछे जब भगवान सुदर्शन को भेज देते हैं, तो दुर्वासा मुनि अल्टीमेटली अम्बरीश महाराज के पास आते हैं अपोलोजाइज करने के लिए कि इफ यू विल फॉरगिव देन ओनली आई कैन बी सेव्ड फ्रॉम दिस सुदर्शन, राइट? तो अम्बरीश महाराज इवन देन ही इज वेरी काम. ही इज नॉट लाइक नहीं अभी मैं मजा चखाऊंगा तुमको, तुमने मुझे श्राप दिया ना, अब मैं तुम मजा चखाऊंगा. ही इज नॉट ऑन दैट प्लेटफॉर्म. ही बिकॉज ही हैज व्हाट, ही हैज डेवलप्ड अ हायर टेस्ट. So he has this higher taste. That's why he doesn't have this intensity of propensity of, you know, that ego clashes or repaying back, like बदला लेने की जो भावना है. He doesn't have this propensity. So we have to be Krishna conscious, beyond to the personal, devoted to the personality of Godhead. This is the aim of real yoga. So what is the real aim of, what is the real aim? The real aim of yoga system is to have been devoted to Krishna's service. So the process of fall down, जो ये process of fall down है, this comes from जो दुर्वासा मुनि का हमने past time जो discuss किया, तो उससे हमें समझ में आएगा कि how are the senses so important, that how, कि कैसे हम ये अपने just by satisfying our senses, how we get lead up in the trap of this fall down, how we end up here. So contemplating the objects of the senses leads to attachment. So when you are too much, when you are giving more importance to your senses, you get attached to the things. Then develops the lust, right? When you are getting attached to the things, then you have the lusty desire that you hold upon on those things, right? So lusty desires are not just one, the sex enjoyment intensity. So lusty desire is for everything. If you have greed for money a lot, then again you have lust for money. So if you have too much attachment to your home or the family members, it is again a lusty desire. So lusty is what? Lusty is the want of more things, want of that thing that कि मेरे अलावा उसको कोई enjoy नहीं कर सकता. So that is the lusty desires. If lust is unfulfilled, anger arises. तो अभी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत यहाँ से हुई कि हमारे जो सेंसेस हैं, we gave more importance to our senses, कि हमारा जो मन करता है हम वो कर रहे हैं. Then we get attached to the things, material attachments, and then there is a lust which is coming up. And when the lust is unfulfilled, when you are not getting more money, when you are greedy after money, and then जब आप पैसे की बहुत लालच करते हैं, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट मनी, सो एंगर अराइजेस, क्योंकि चीजें अपने मन, अगर हमारे मन मुताबिक नहीं होती, तो अब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, तो जब सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, लस्टी डिजायर हो गई है, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? एंगर विल कम. यू विल फेस एंड यू विल हैव दैट एजिटेशन. दुर्वासा मुनि के साथ क्या हुआ? दुर्वासा मुनि के साथ भी यही हुआ कि ही ऑर्डर्ड अम्बरीश महाराज दैट ही विल हैव प्रसादम with him. And then what happened? Amrish Maharaj broke his Ekadashi fast. So this Durvasa Muni got agitated. क्योंकि उनके मन मुताबिक कार्य नहीं हुआ, इसलिए उन्हें गुस्सा आया. So the complete delusion. And whenever you are in anger, you'll yourself face this thing. अगर आप लोगों ने वैसे भी महसूस भी किया होगा कि जब आप बहुत गुस्से में होते हो, तो जो चीजें होती है ना, आपको साफ नहीं दिखाई देती. आप बस वही देखते हो जो आप, जिसका चश्मा आपने लगा रखा होता है. इससे मुझे रामायण का पास टाइम याद आता है, इफ यू ऑल रिमेम्बर, कि एक बार वो फूल का नाम मैं भूल रही हूँ, कि वो फूल जो होता है, तो सीता जी कहती हैं इट वाज अ वाइट कलर, एंड हनुमान जी, राम आस्क्ड, तो हनुमान जी बोलते हैं कि इट वाज ऑफ द ग्रीन कलर.
So then Ramji says that कि because you were in so much anger that you couldn't see the right thing, क्योंकि जैसे हम जो चश्मा हम पहनते हैं हमें दुनिया वैसी ही दिखती है, तो अभी गुस्सा बहुत आ गया और गुस्सा इतना तेज आ गया तो अभी सामने कंप्लीट डिल्यूजन हो गया. एंड देन डिवेलपमेंट ऑफ मेमोरी. ऑब्वियस सी बात है, जब डिल्यूजन है तो योर माइंड इज नॉट इन योर कंट्रोल, यू आर नॉट इन योर control, so you're completely confused, you don't know what is right, what is wrong, because you are in anger now. So intelligence is lost. So this is how the fall downs again into the material pool. So it started from where? Sense gratification. You got attached to things. And then you got this lusty desire. Then comes the anger, and anger causes delusion. Then bewilderment of memory, and intelligence is lost. And hence, there's a fall down. So senses are naturally active, need real engagement, either in the service of Lord or materialism. This is what we just discussed. कि senses तो naturally active रहेंगे, right? The perception will always be there. It is just you need to involve them into the right thing. So only way to get out of the material puzzle is Krishna consciousness. So there is a bewilderment in the entire world. That the only way out of it is the Krishna consciousness. So the best example is of Haridas Thakur. आपने हरिदास ठाकुर का पास टाइम सुना होगा कि कैसे उन्हें माया पर्सोनिफाइड उनको आती है टू अल्यूर हिम व्हेन ही इज डूइंग हिज जपा, बट ही डजंट गेट अल्यूर्ड बाय इट, इंस्टेड वो उनको भी भक्त बना देते हैं, राइट? So the secret of success in terms of sense control is the higher taste shuns of all material enjoyment. Yukta Vairagya use everything in the service of the Lord. And Yukta Vairagya offers positive enjoyment. Example, good eatables, one enjoys life by prasadam. So no danger of fall down because of the philosophy of Yukta Vairagya, whereas dry renunciation, Falgu Vairagya, may lead to the fall down because of lack of positive enjoyment. So what is the secret of success? The secret of success is the sense controlling. So when you are controlling your senses, you have this higher taste, right? And you shun off this material enjoyment. You do not care about this material enjoyment. And there's the Yukta Vairagya. You use everything in the service of Krishna. And when you are using everything in the service of Krishna, so there is a positiveness, the positive enjoyment is there, correct? ऑब्वियसली बात है, जो हम एग्जाम्पल है, जैसे प्रसाद जो हम लेते हैं, प्रसाद इज व्हाट इज बीन टेस्टेड बाय कृष्ण, so we are taking the remnants of the food which is being tasted by Krishna, so definitely we are getting this positive enjoyment in us. So there is no danger of fall down when we are in this yukta vairagya, when we are following this yukta vairagya philosophy. We are not there is no danger of fall down. But whereas you are in this falgu vairagya, there are chances of fall down because you are not engaging. There is a lack of positive enjoyment. So you're just focusing on one light or one energy, but you're not engaging your senses into the enjoyment. Text 2.64 to 71. This is very, very important actually. This samadhi phase comes after a lot of struggle. This जो हमारा ये section है, it comes after a lot of struggle. This is the essence of Krishna consciousness. जो chapter 2 है, chapter 2, Bhakti Siddhanta Saraswati used to say that this is the essence of it. This is the essence of entire Bhagavad Gita. Because इस chapter में you'll find the division of everything and the classification of everything with beautiful description, what do's, what are not don'ts, and how to attain the real perfection of life. So one who can control his senses by practicing the regulated principles of freedom can obtain the complete mercy of Lord and thus become free from all attachment and aversions. If Krishna wants, the devotee can do anything which is ordinarily undesirable, and if Krishna does not want, he shall not do that which he would have ordinarily done for his own satisfaction. So अगर कृष्ण चाहते हैं तो एक भक्त, एक devotee can do anything which may not be possible ordinarily, but अगर कृष्णा नहीं चाहते हैं तो maybe he must be doing for his own enjoyment, but it should not be done, right? He should not do that which he would have ordinarily done for his own satisfaction. So unless one is in Krishna consciousness, there is no possibility of peace. Disturbance is due to want of an ultimate goal. And when one is certain that Krishna is the enjoyer, proprietor, and friend of everyone and everything, then one can with a steady mind bring about peace. So disturbance is due to want of an ultimate goal, right?
And when one is certain, अगर हमें पता है कि हमारा the ultimate goal is what? Is the service of Krishna. The ultimate goal is Krishna. So the mind gets fixed up. Then there is a peace. So there is disturbance in your mind when you keep on searching for the ultimate goal. जैसे when you are in 12th class, right? तो आप 12th class में तो you have this anxiety that what to do after this 12th class. तो आपका mind is your mind is a lot of disturbed कि what to do, what not to do, ये college join करें या वो college join करें. You don't have that complete vision what to do and what not to do. So there is a lot of disturbance. So similarly, a realized person, if he has fixed up that Krishna is the ultimate goal, he'll have peace in his mind. So, therefore, one who is engaged without a relationship with Krishna is certainly always in distress and is without peace. So, however much one may make a show of peace and spiritual advancement in life, so if you do not have this thing fixed up in the mind, so even though you keep on pumping in your, you keep on showing off that there is a peace, but there is not eventually there is no peace, and you cannot advance in the spiritual in your spiritual life. So, unless all of the senses are engaged in the service of the Lord, even one of them engaged in sense gratification can deviate the devotee from the path of transcendental advancement. ये line फिर से पढ़ो. Unless all of the senses are engaged in the service of the Lord, even one of them engaged in sense gratification can deviate the devotee from the path of transcendental advancement. This is very, very important thing to understand. कि until unless we are engaging all our senses, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ अपने जो जो हम जीवा है उसको बस एंगेज किया सिर्फ चैंटिंग में या प्रसादम में, लेकिन उसके अलावा देखने में भी हमारे पैरों को भी एवरीथिंग एवरीथिंग यू हैव टू ऑल योर सेंसेस हैव टू बी एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा. द टेस्ट कृष्णा प्रसादम, टू यूज योर आईज टू सी द ब्यूटीफुल deities, use your legs to visit temples, dham. Everything has to be, every senses has to be used in the Krishna service. Even if one is left out, then the path is then the devotee is deviated from the path of transcendental advancement. So one who has understood this, that only by Krishna consciousness is one really established in intelligence, and that one should practice this art under the guidance of a bona fide spiritual master, is called sadhak, or a suitable candidate for liberation. So there are two classes of intelligent men. Those involved in material action for sense gratification, they are asleep to self-realization. So they dream of varieties of sense pleasures. Sometimes they feel happy and sometimes distressed. And those who are introspective and awake to the self-realization, they're always indifferent to the materialism. So they feel transcendental pleasure in gradual advancement of spiritual culture, always undisturbed and indifferent to the materialistic happiness and distress. तो यहाँ दो दो तरह के लोगों की बात की गई है. एक, who is always involved in the material action, in the sense gratification, and the other who are introspective and they are awake to the self realization. तो जो ये श्लोक है, this श्लोक is also very very important. Everybody should read it. So it is, जैसे इस श्लोक में, इस श्लोक के परपट में लिखा हुआ है कि जो जो एक रियलाइज्ड पर्सन के लिए दिन है. I'll read through it. Just give me a minute. That's a beautiful shlok. That's why I wanted to read it. Hmm. So shlok 2.69. या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संम्यामि यश्यं जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मनः. So what is the translation? What is night for all beings is the time of awakening for the self-control, and the time of awakening of all living beings is the night for the introspective sage. There are two classes of intelligent men. One is the intelligent in material activities for sense gratification, and the other is introspective. Activities of the introspective. Just give me a minute.
Okay. So there are two classes of men. So the one is who is asleep when the realized person is awake, and the other is awake when the world is sleeping. Okay. So they are basically introspective sage remains alert in the night of the materialistic men. The sage feels transcendental pleasure in the gradual advancement of spiritual culture, whereas the men in the materialistic activities, being asleep to the self-realization, dreams of varieties of sense pleasure, feeling sometimes happy and sometimes distressed in his sleeping condition. So the introspective man is always indifferent to the immaterialistic happiness and distress. He goes on with his self-realization activities undisturbed by the material reactions. So the person who is self-realized doesn't get affected by the material reactions. Okay. So this is what the purport is. And it is very, very important shloka. The devotees of Krishna have no material desires and therefore they are in the perfect peace. Desire for becoming Krishna consciousness is actual desirelessness. So a person who wants to become a Krishna conscious, that desire is desirelessness. So Arjun did not want to fight for his own sense gratification, but when he became fully Krishna conscious, he fought because Krishna wanted him to fight. So for himself, there was no desire to fight. But for Krishna, the same Arjun fought to his best ability. Desire for the satisfaction of Krishna is real desirelessness. So what is said here in the purport is कि अर्जुन पहले युद्ध नहीं करना चाहते थे बट जब कृष्ण ने उन्हें बोला कि नहीं यू हैव टू फाइट दिस इज राइट बाय योर ड्यूटी दिस इज द एक्चुअल धर्म ऑफ अ क्षत्रिय ग्रस्त क्षत्रिय so he did fight and he did fight his best to his quality. So why did he do it? Why? To satisfy Krishna, because he had been ordered by Krishna. So he does not wanted to satisfy his own senses. Instead, he was doing as per the commands, as per the orders given by Krishna. So understanding of Krishna consciousness is the basic principle of real peace. Buddhist conception only void after completion. Bhagavad Gita, Krishna consciousness conception, actual life begins after the completion of material life. So कई philosophies हैं. So they say that after when once the life is over, once this body once the soul leaves this body, what happens? कि will be mixed up in the void, like कि हम एक spiritual energy में हम mix up हो जाएंगे. We'll mix up in that. But the Bhagavad Gita says no, the actual life begins after this material life. So we are aspiring for that life. That life we have the aspirations. For the gross materialistic, it is sufficient to know that one has to end his materialistic way of life, but for spiritually advanced person, there is another life after materialistic life. So here we end the chapter chapter 2, where we discussed all these 5 sections. So we have like 10 more minutes, so we can move on this chapter 3. So we'll start with chapter 3. Just give me a minute. You all should just read when we are discussing these shlokas. It will be easy for you to understand the meaning of them. Okay, I'll start sharing. तो चैप्टर 3 जो है कर्म योग है. ये दिस इज जस्ट रिलेटिंग. चैप्टर 2 में हमने कर्म कांड पढ़ा था, राइट? हमने अभी डिस्कस किया जो सेक्शन 3 था कर्म कांड. दिस इज अब उसका हायर डिस्क्रिप्टिव वर्जन यहाँ पर है चैप्टर 3 कर्म योग में. So again, we have divided this chapter into 5 sections. Section 1 is renunciation or work. What has to be done? So Arjun is confused by the words of Krishna. Now he has a confusion. What has to be done? He should work or he should renunciate. Then section 2 from 3.3 to 3.9, Nishkam Karmi Yoga. Work combined with the knowledge and detachment. Offer the fruit of the work for the satisfaction of Krishna. Nishkam Karmi Yoga allows the soul, active by nature, to be purified through detached activities. So we learn how. Section 3, from Karma Kand to Karma Yoga. अब ये उससे आगे का. If one cannot perform detached, dutiful work, it is better to follow Karma Kand section of the Vedas, but do it for the Krishna's pleasure. All the Vedic duties which prescribe sacrifices, etc.
Section 4 is Nishkam Karma to the set correct example. So dutiful acting without attachment sets the correct example for others who are less advanced. Section 5, be aware of lust and anger. So they foil one's performance of duty and incur sin. Regulative senses and strengthen intelligence to control lust. So we'll be discussing all these 5 sections in Karma Yoga. So today we'll try to finish up 2 sections. Section 1, jo Arjun is now like confused. What has to be done? So Arjun said, O Janardhan, O Keshav, why do you urge me to engage in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than the fruitive work? So sometimes Krishna consciousness is misunderstood to be inertia, and one with such a misunderstanding often withdraws to a secluded place to become fully Krishna conscious by chanting the holy name of Krishna. So it happens with devotees a lot of time कि क्या होता है कि हम we are like हम कृष्णा consciousness को we understand it incorrectly कि we think it कि I can do my chanting alone, just doing my chanting alone. I don't need devotee association. I don't need anybody. I can just sit in a secluded place and just do chanting. और बस उससे हो जाएगा सब कुछ. I can Krishna will be very happy with me and I'll attain. There would be an advancement in my spiritual life. So this is the wrong conception that leaving everything aside, मैं अपना जो हमारा काम है वो सब छोड़ छाड़ के बच्चे परिवार सबको छोड़ के मैं एक पहाड़ों पर चला जाता हूँ, मैं चली जाती हूँ, वहां बैठ के आराम से जप करूंगी और ये सब बहुत डिस्टर्बेंस है, ये मटेरियल अटैचमेंट्स हैं. So this is a wrong conception of Krishna consciousness, and if somebody tries to do that, it's actually creating a wrong example in the society. So Arjun also thought of Krishna consciousness or Buddhi Yoga or intelligence in spiritual advancement of knowledge as something like retirement from the active life. So even Arjun thought it. अर्जुन इज बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं अर्जुन के वो हमारे जैसे लोगों के क्वेश्चंस और एक्टिविटीज से रिलेटेड है. तो this is the Arjun is saying what कि अर्जुन को कंफ्यूजन है कि retirement from active life, that is Krishna consciousness. So but as a sincere student he placed the matter before his master and questioned Krishna as to his best course of action. तो अभी as a sincere student एक जो एक सही जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनको जिनको जानना है, जिनको उत्कंठता होती है समझने की कि सही चीज क्या है, सो दे क्वेश्चन बैक, राइट. तो वो क्वेश्चन करते हैं और वो ये पूछते हैं कि what is the right course of action? In answer, Lord Krishna elaborately explained Karma Yoga or work in Krishna consciousness in this third chapter. तो अभी इस chapter में Krishna is going to elaborate on this Karma Yoga. So by his question, he is clearing the path of Krishna consciousness for all the students who seriously want to understand the mystery of Bhagavad Gita. So this is the reason why Krishna had 18 chapters in Bhagavad Gita, so that there are no further doubts for us and we have the clear understanding of what exactly Krishna consciousness is and how and what to do in this. The section 2, this is the section 1. जो पहले 2 श्लोक है उसमें अर्जुन के प्रश्न है और अर्जुन का कंफ्यूजन है. Section 2 is 3.3 to 3.9 is निष्काम कर्म योग. I think we can start. थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी इस पे अच्छे से डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. Liberation or bondage is not determined by one's activities, but by one's consciousness in performing those activities. So thus renunciation is not giving up of activities, but is the giving up of attachment to the fruit of activity. So what exactly the renunciation is? Nishkam Karma Yoga. Jo Nishkam Karma Yoga hai, that is given importance here. Not giving up your work is not given importance. Giving up your work is wrong, is not the prescribed duty. So giving up the fruits of the activity is what is prescribed here. This section describes the defects in the desire to renounce prescribed duty. So action without knowledge is mundane. Knowledge without action is powerless. So if you are doing anything without knowledge is of no meaning, is senseless. But if you have knowledge and if you're not doing any actions, so it doesn't has any power, it's powerless. So religion without philosophy is sentiment or sometimes fanatism, while philosophy without religion is mental speculation. So the ultimate goal is
Krishna. So what is the ultimate goal? We'll keep repeating this sentence again and again in this Bhagavad Gita, just to make it 100% sure that we realize the concept of it in and out. The ultimate goal is Krishna, and we have to engage our senses in Krishna consciousness. We have to serve Krishna by all our senses. So in the purport, the comparison of Shankhya योग and बुद्धि योग is given. अगर आप लोग को याद हो तो हम चैप्टर 2 में हम श्लोक 2.31 2.69 हम इन सब में शंख योग का पर्पट आप रीड करेंगे तो there is a this word being used Shankh Yoga again and again. So what is the difference between the Shankh Yoga, the philosophical speculation, and Krishna consciousness? So this is an indirect path, whereas Buddhi Yoga, Krishna consciousness, is a direct path, a process of directly connecting the level of our activity of or karma for the purpose of Krishna consciousness. Dependence on personal endeavor. So meant for persons who want to understand things by experimental knowledge. जो experiments करके अपना philosophy लगा के और dwell down करके with their own limited set of knowledge, they want to develop their own path. Okay, so and this is Bhakti Yoga is, Buddhi Yoga is dependence on Krishna's mercy, a process of depending entirely on Supreme and does not depend one's own limited knowledge, a limited capacity of sense control, purity to advance. Therefore, it is easy and better. इसमें हमें अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो जैसा prescribed है, as it is हमें scriptures follow करना है. So जो indirect path है, that is unsure of success, whereas there is a surety of success. May never reach the highest rung of ladder, which is to attain Krishna's mercy. So there may be possibility that even after so much speculations, you do not realize that the Krishna is the ultimate aim. Whereas when you are Krishna conscious, so there is a surety of success because strength is given by the mercy of Krishna and Vaishnavas. Thus, one is easily relieved from the bonds of action, and there is no flaw in the process of Buddhi Yoga. So initial purification required by prescribed duties. If you are following this philosophical speculation, so there is a purification required required by prescribed duties. So a gradual path of purification of senses by philosophical process. And whereas in Krishna consciousness is itself the purificatory process. So इसमें आपको पहले से purification is important, and then you have to undergo the philosophical speculation, and then you may or may not achieve success. Whereas in Krishna consciousness, there is this process itself is the purifying process. So renunciation of activity is not a means of purification. It is the result of purification. So the renounced order of life can be accepted upon being purified by the discharge of the prescribed form of duties, which are laid down just to purify the heart of materialistic men. तो यहाँ जो पर्पट में हम जब डिस्कस करते हैं तो इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि you cannot go with the sannyas order. There's a one ashram system, right? आप लोगों ने ये सुना होगा one ashram system है. अब जो वन आश्रम सिस्टम है उसमें जो वानप्रस्थ और सन्यास है उससे पहले जो ग्रस्त जीवन भी है उससे पहले आपको अपने जो ड्यूटीज हैं वो फॉलो करना है. यू कैन नॉट डू लाइक यू जस्ट डायरेक्टली गो ऑन टू द सन्यास. सो सन्यास द renunciation of activities is not the means of purification. This is what has been described here. So without the purification of heart, sannyas is simply a disturbance to the social order. So if there is not the purification of heart is not there, and if you are taking sannyas, it will create a social disturbances. He who makes a show of being a yogi while actually searching for the objects of sense gratification must be called the greatest cheater, even though he sometimes speaks of philosophy. His knowledge has no value because the effects of such a sinful person knowledge are taken away by the illusory energy of the Lord. So a householder can also reach this destination by regular service in Krishna consciousness. So it is not that a householder, एक जो ग्रस्त है, वो they cannot attain this. They can definitely attain it. They can do the prescribed duties, and they can gradually detach themselves from the foundations, and then the वानप्रस्थ जो ग्रस्त के लिए जो बताया गया वो वानप्रस्थ जो बताया है. So that is the one ashram order which has to be followed. It is not that renunciation of your duties at all कि हमने बस बोल दिया कि नहीं अब हम कोई काम नहीं करेंगे या you're shunning of your prescribed duties and saying that I am in the renounced order of life. I have taken sannyas from all the activities. So this is just a show of a yogi, but actually there is no purification in the heart.
So a sincere sweeper in the street is far better than the charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living. तो प्रभुपाद ने अब बहुत अच्छी पपट में ये लाइन लिखी हुई है कि जो एक एक स्वीपर होता है, झाड़ू मारने वाला होता है, जो सड़कों पर झाड़ू मारता है, तो अगर कोई सिंसियर स्वीपर है, वो फार बेटर है एक जो जो चार्टर मेडिटेटर है, मतलब जो शो कर रहे हैं, जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि ही इज अ मेडिटेटर बट ही इज नॉट एक्चुअली अ मेडिटेटर, एंड और वो मेडिटेशंस वगैरह और ये फिलॉसफी वगैरह ये प्रीच कर रहे हैं जस्ट टू मेक हिज लिविंग, मतलब अपने फॉर द सस्टेनेंस ऑफ हिज फॉर हिज एक्टिविटीज ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी अ मेडिटेटर. So this is an important shlok. We should all should read it. 3.8. Perform your prescribed duty, for the action is better than inaction. A man cannot even maintain his physical body without work. So you have to do your prescribed duties. You cannot you cannot be inactive. It's not sensible, right? Men cannot even maintain his physical body. तो अगर जैसे हम बोले कि I'll be inactive, I'll do no actions, अब मैं कोई भी activity नहीं करूँगी, it's not possible. Because to maintain this physical body, you have to do some activities, like for example eating food, right? या respiration is also an activity. अगर हम बोलते हैं कि I'll shun off all the activities, that means if I'm shunning off my respiration, I can die, right? So even though to maintain this physical body, it is very, very much important to do the activities. So one has to maintain one's body and soul together by some work. Work should not be given up capriciously without purification of material propensities. So we'll end up here and we'll take it further and we'll try to complete this chapter 3. This is not so big. We'll try to complete in the next class. If somebody has some questions, comments, or corrections, I would be very happy to hear them, or else we can wind up. Okay. Thank you so much, Matajis, for being with me in this Bhagavad Gita reading session. So it is the mercy of all of you that because of your mercy that I am able to study and do थोड़ा बहुत जो analysis है उसमें करने का मैं कोशिश कर रही हूँ. So thank you so much for being patient with me. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय प्रभुपाद. जय गुरु महाराज. अनंत कोटि वैष्णव. Hare Krishna. Thank you.